ट्राई करंतु which article of the Indian Constitution refers to the annual financial statement for the central government? Okay, annual financial statement which is called budget, right? budget विषय रे annual financial statement विषय रे भारतीय संविधान रो क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि? भारतीय संविधान रो क्यों आर्टिकल रे वर्णना करा जायछि? ऑप्शन बी आर्टिकल कोन 112 आर्टिकल 112 रिलेटेड टू बजेट बट जेहेतु हम भारतीय संविधान रे बजेट शब्दटी नाही दैट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन बी समस्त चूज करछन नेक्स्ट हु प्रिपेयर्स द यूनियन बजेट इन इंडिया कोंतु इंडिया रे यूनियन बजेट को के प्रस्तुत करे के प्रस्तुत करंती यूनियन बजेट को ऑप्शन डी हो राइट आंसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा कौन हुए यूनियन बजेट को प्रस्तुत करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच ईयर डिड द यूनियन बजेट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी वेरी इंपोर्टेंट 2017 मसिया ठारू फर्स्ट फेब्रुअरी ठीक है वर्किंग डे फर्स्ट फेब्रुअरी वर्किंग डे ठारू आपनकर कोन होची बजेट को उपस्थापन करा जाउची ठीक है पार्लियामेंट 2017 ठारू नेक्स्ट who presented the first union budget of independent India प्रथम स्वाधीन भारत रो बजेट को किए उपस्थापन करथिले केंद्रीय बजेट को किए उपस्थापन करथिले ऑप्शन सी आरके शानमुगाम छेट्टी हबो यार राइट आंसर आरके शानमुगाम छेट्टी इज राइट आंसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा आसी पारे आपनकर क्वेश्चन माने रखंतु व्हाट टाइप ऑफ बजेट शोस टोटल रिसीप्ट्स इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर कोंतु आपनकर टोटल रिसीप्ट्स एवं एक्सपेंडिचर कोन हबो समान हेबो सेही प्रकार बजेट को कोन कहजिबो बैलेंस्ड बजेट कहजिबो बैलेंस्ड बजेट अर्थात कोन आय एवं व्ययटा समान रहे नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस जाको डिजिटल कहा जाय यूनियन बजेट ऑफ इंडिया ये उपस्थापन करथिले प्रथम डिजिटल बजेट दैट इज कॉल्ड पेपरलेस बजेट निर्मला सीतारमण ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण हबो यार राइट आंसर The economic survey is presented by the finance minister on economic survey को उपस्थापन करा जाए जेउ दिन बजेट होना जिवो तार पूर्व दिन ए डे बिफोर द बजेट अर्थात बजेट पूर्वरु इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करा जाए व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी रो करेंट स्टेटस हो जेटा गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अर्थात एफएसडीसी विषय रे संविधान रे वर्णना करा जाय नाही एवं एथि पई कोनोसी एक्ट को पास करा जाय नाही नेक्स्ट कैपिटल रिसीप्ट्स इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोंतु कैपिटल रिसीप्ट्स रे कोन आसीबो कैपिटल रिसीप्ट्स रे आसीबो दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स दिस इन्वेस्टमेंट मींस गवर्नमेंट रो जो एसेट रहिछि सेटा से कोन करबो सेही तार शेयर को से कोन करबो सेल करबो नेक्स्ट व्हाट डज ए फिस्कल डिफिसिट इंडिकेट फिस्कल डिफिसिट कोन फिस्कल डिफिसिट कोन जो आपनकर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो गैप को फुलफिल करबा पई बोरो करिवो गवर्नमेंट कोन करिवो बोरो करिवो बोरोइंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑप्शन बी बोरोइंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द बजेट बिकम्स एप्लीकेबल फ्रॉम बिकॉज़ हमें जानिले प्रथम फेब्रुअरी को बजेट को उपस्थापन करा जाय एवं या को कार्यकारी करा जाय प्रथम अप्रैल को अप्रैल फर्स्ट हेबो यार राइट आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोंतु रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे निम्नलिखित मध्यरु केउटा आसीबो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रे केउटा आसीबो सैलरी पेमेंट्स ठीक अछि एक्सपेंडिचर रे सैलरी पेमेंट्स आसीबो राइट आंसर ठीक जो सैलरी प्रोवाइड करा जाय दैट इज कोन आसीबो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू प्रेजेंट द यूनियन बजेट इन इंडिया प्रथम महिला के थिले जे कि केंद्रीय बजेट को उपस्थापन करथिले इंदिरा गांधी ऑप्शन बी इंदिरा गांधी इज योर राइट आंसर which of the following is not a source of revenue receipts कोन निम्नलिखित मध्यरु केउटा revenue receipts रो source नुह revenue receipts रो source नुह that is which option is your right answer question number 14 loan from the world bank कोटे revenue receipts रो उत्स हेबो नाही next question which type of deficit is calculated as the total expenditure minus total receipts total expenditure ru receipt जदि आपण माइनस करिवे बजेट डिफिसिट आसीबो नेक्स्ट हु इज द
ex officio chairman of the Financial Stability and Development Council FSDC रो chairman किए अटंती finance minister. Option D is your right answer. Next question. When was the first economic survey conducted in India? 1950. 1950-51 रे एटा प्रथम थर पय कंडक्ट करा जायतिला. Which of the following is considered a non-tax revenue source? Non-tax revenue source टा कोन? गवर्नमेंट कोन करिवो जहा इंटरेस्ट पाइबो, इंटरेस्ट receipts we can say. Option C is your right answer. Who holds the record for presenting the most number of union budgets in India? Most number of केंद्रीय बजट को उपस्थापन करछंती मोरारजी देसाई. Option B मोरारजी देसाई is your right answer. What is the impact of borrowing from the RBI on the economy? ठीक अछि RBI रु कोन करिवो बोरो करिवो ताले इकोनॉमी रे कोन हबो इकोनॉमी रे आपनकर जो मनी सप्लाई ता बढ़ी जिवो ठीक अछि इंक्रीज मनी सप्लाई. What is meant by fiscal deficit? Okay, already discussion is said. Total expenditure minus total revenue receipts, that is fiscal deficit. Next question. What does a surplus budget indicate? Surplus माने कोन जोटा कहजु आपनकर अतिरिक्त ठीक अछि माने बजेट ता अधिक रहबो ठीक अछि that is called कोन that is होची receipts are more than expenditure. Receipts are more than expenditure अर्थात जहा खर्च हबो ताटर अधिक आय ऊपर कोन करे स्थिर करे that is surplus होची बजेट कहजु. What is the major objective of deficit financing? Deficit financing का major objective कौन? Promote करिवा economic development. Very very important. A type of questions आपन करो mains level रे रहिबो. Next. What does the term public debt refers to? Public debt रो अर्थ होची government कोन करिवो बोरो करिवो. ठीक अछि. Option C होबो right answer. The last railway budget was merged with the union budget in which year? Last time by railway budget 2016 मसियार ही प्रेजेंट करा दितला या थारु कोन करा दिछि आ रेलवे बजेट को सेपरेटली प्रेजेंट करा जाउ नै. व्हाट डज प्राइमरी डिफिसिट मेजर कोंतु प्राइमरी डिफिसिट कोन मेजर करूछि प्राइमरी डिफिसिट या मेजर करूछि फिस्कल डिफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स. ऑप्शन सी फिस्कल डिफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ राइट आंसर. व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्राइमरी डिफिसिट? प्राइमरी डिफिसिट रो फार्मूला कोन प्राइमरी डिफिसिट आपण केमिति बाहर करि परिबे fiscal deficit to interest paid को जतेला आपण माइनस करिवे that is आपनकर प्राइमरी डिफिसिट आसीबो. What is the monetized deficit कोंतु what is monetized deficit? Monetized deficit होची borrowing from RBI Reserve Bank of India रो जो बोरो करा जिवो that is monetized deficit कहजिवो. ओके revenue deficit occurs when revenue deficit occur हो जतेबेला आपनकर revenue expenditure कोन हो अधिक रहइबो काठारु revenue receipts थारु ठीक अछि receipt ru expenditure ta adhika rahibo in terms of revenue. Next, what is the aim of development expenditure? Development expenditure ro mukhya uddeshya heउची promote kariba gote long term economic growth pai. Option D is your right answer. Which of the following is not a development expenditure? देखंतु defense service रे जहा भी आपण expendi माने खर्च करिवे that is gote development expenditure आसीबो नाही. Which of the following is an example of non development expenditure? Non development expenditure टा आपनकर police and defense. Option B police and defense our right answer. Which expenditure is directly related to the productive capacity of the economy? Direct related रहइबो माने that is development expenditure. Development expenditure our right answer. Next, scholarship टा कोन हो student को scholarship provide करियो ओटा welfare sense रे welfaring टा गोटे non development ही पारे but scholarship टा आपनकर non development expenditure भी आसी परिबो but primarily we can consider development expenditure. Option A is your right answer. Next question. How many public sector banks are there in India? 12 टी रहिछि public sector bank रहिछि. Option C is your right answer. Which public sector bank has its headquarters in Pune? Pune रे कार रहिछि Bank of Maharashtra रो headquarter रहिछि Pune. Okay. Next question. What was the old name of the State Bank of India? SBI रो old name थिला कोन Imperial Bank of India. Option C is your right answer. As of 2025, who is the chairman of State Bank of India? Challa Srinivasulu Setty. Challa Srinivasulu Setty is your right answer. Next, what percentage of branches must a new bank open in rural areas? जेतेबेले गोटे new bank open हबो must be 25% रो से branches open करिवार अछि rural area रे. Next, which was the first payment bank in India? Very very important. Airtel Payment Bank. Airtel Payment Bank is your right answer. What is the purpose of MIC? Magnetic ink character recognition ro
पर्पज होची चेक को प्रोसेसिंग करिवो बैंक चेक को प्रोसेसिंग कराइवो व्हाट डज द स्विफ्ट कोड हेल्प विथ स्विफ्ट रो काम होची इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करबा पई जेमिति आपनकर डॉलर टा कोन हबो रुपी रे कन्वर्ट हबो रुपी टा डॉलर रे कन्वर्ट हबो सेति स्विफ्ट को यूज करा जाय व्हाट इज द लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांसफर इन इंडिया यूपीआई रो लिमिट जदि हम पर डे हिसाब रे कथा बा तो नॉर्मली 1 लाख रहे तो आई थिंक ऑप्शन ए चूज करिया 1 लाख ही परिबो अदरवाइज किसी गोटे माने बिजनेस पर्पस ट्रांजैक्शन रे 2 लाख टू 5 लाख पर्यंत रहउछि नेक्स्ट व्हिच वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया HSBC मन रखंतु HSBC व्हिच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट व्हाइट लेवल एटीएम होछि दैट इज इंडिकेस ऑप्शन बी टाटा रो इंडिकेस बिकॉज़ देखंतु टाटा कोन गोटे बैंकिंग एरो माने टाटा रो बैंकिंग सिस्टम नाही ओके बट ये कोन करछि दैट इज से समय रे फर्स्ट व्हाइट लेवल रो एटीएम को से लॉन्च करथिला नॉन बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंकिंग सिस्टम को यूज करी दैट इज गोटे एटीएम को लॉन्च करथिला इंडिकेस नेक्स्ट हु रेगुलेट्स इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया जेमिति आपनकर सेबी रो काम कोन स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज जेमिति आपनकर शेयर मार्केट को और सिक्योरिटी मार्केट को जे जेमिति रेगुलेट करे सेमिति इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करूची IRDAI देन IRDAI रो फुल फॉर्म कोन हबो आपन कमेंट सेक्शन रे जणाइबे NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर 2008 मसिया रे NPCI प्रतिष्ठा होइतिला व्हाट इज द करंट कैश रिजर्व रेशियो एज ऑफ 2025 2025 सुधा CRR रो ठीक अछि करंट कैश रिजर्व रेशियो ता केते रहबो 3% आपनकर CRR केते रहिछि 3% रहिछि करंट कैश रिजर्व रेशियो increasing the SLR will result in SLR जदि बढ़ी जिवो ताहाले डिक्रीज मनी हबि आपन मार्केट रे कोन लोकन पाखरे मनी सप्लाई ता कमी जिवो नेक्स्ट व्हाट इज द रेपो रेट एज ऑफ 2025 5.50% अछि रेपो रेट मन रखंतु व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होछि ओशियन ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर द मेन कॉज ऑफ सुनामी रो मुख्य कारण earthquake on sea floor we can say option 3 tides are caused by the gravitational pull of the sun and moon on the earth option 3 is your right answer rubber plantation are found in rubber plantation ता आपण मुख्यतः देखिया पई पाइबे equatorial region रे option 4 is your right answer very strong and cold icy winds that blow in the polar regions are called blizzards को हजबो option 3 is your right answer condensation is the reverse process of vaporization or reverse process को condensation को हजे next in atmosphere the lowermost layer tar होची आपनकर troposphere is your right answer frontal rain is caused by cyclonic activity option 3 is your right answer smog is combination of smog and fog को combine करके smog form हुए the deposits of the ancient Tethys Sea were folded to form the deposits of the ancient Tethys Sea रो कौन थिला सेटा आपनकर Himalayas mountain form हितला next question the tropical grasslands is called tropical grasslands को savanna को जाय option 3 savanna is your right answer why is the south pole colder than north pole कारण कोन north pole अपेक्षा south pole अधिक colder अत्यधिक ठंडा अटे because इटा हाई अल्टीट्यूड अधिक उच्च रे अवस्थित अटे मोराइन्स आर फॉर्मड इन ग्लासिकल रीजन्स रे मोराइन्स गुडा का फॉर्म हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जांपल ऑफ एटा कोन आपनकर फोल्ड माउंटेन रो एग्जांपल अटे हिमालयन माउंटेन डैश इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ रो थिनेस्ट लेयर होची क्रस्ट ऑप्शन 3 क्रस्ट इज योर राइट आंसर व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फियर बिकॉज़ अर्थ में कोन अछि gravity अछि माध्याकर्षण शक्ति अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of these is a dropped planet होछि that is Eris is your right answer next question which of the following does not belong to the solar system रो belong करिवो नाही that is nebula is your right answer next question what process take place during the youthful stage of a river होछि valley deepening is your right answer rainfall caused by intense evaporation in the equatorial areas is called conventional rainfall एटा कोन कहजो conventional rainfall कहजो ring of fire is found commonly in ring of fire आपन देखिया पई पाइबे Pacific Ocean रे option 1 is your right answer
The space retaining life in any form is called, that is biosphere. Option 2, biosphere is the right answer. Alluvial soils are rich soil for crop cultivation but are poor in nitrogen and humus. Poor. Great Barrier Reef, the world's largest coral reef, is located in world largest coral reef. Great Barrier Reef is Australia. Option 2 is your right answer. The highest grade and best quality of koila that is anthracite. Option 4 is your right answer. Next question number 76 try kariba. Flash floods are associated with cyclonic storms is your right answer. The main source of usable water on the earth is that is underground water. Option 3 is your right answer. Tundra gote kono? Tundra hoji gote cold desert. Next, hydraulic action is the type of erosion caused by running water. Running water is your right answer. Next, which of the following is the newest geological era? केउंटा पारिबो? Jurassic, Cretaceous we can say. Option 3 is your right answer. Which emits the following planets has its orbit closest to sun? Venus is your right answer. Next question. The outermost layer of the sun is called corona. Very important. Option 3, corona is your right answer. The largest forest, which cover 25% of the world's forest land, is called world forest. 25% gote forest cover करुचे, that is होचे आपनकर taiga forest of Siberia. Option 2 is your right answer. Which planet is called evening star? Venus होचे evening star भाबरे जाना जाय. If a star bigger than sun but not more than twice as big, it will turn into, that is pulsar. Pulsar is your right answer. Next question. Light from the sun reaches us in nearly 8 minutes. 8 minutes 20 seconds, but option 8 minutes. Which of the following ocean has the shape of the English alphabet S? That is Atlantic Ocean. Option 3 is your right answer. Which of the following type of soil is best suited for cotton cultivation? Very important. Cotton cultivation पे अपना मुख्यतः black soil रे इटा भला हुए. Next, two seas or water bodies connected by a narrow stretch of water is known as strait. Next, Mediterranean type of climate is characterized by dry summer and wet winter. Next, subtropical high pressure belts are otherwise called horse latitude. Very important. Horse latitudes. Tidal forest is otherwise called mangrove forest. Option 3 is right answer. In dense forests, trees sits their leaves in a particular season. In dense forest, that is deciduous forest. Next question. Soil formed by leaching and oxidation. Soil जो गठन होइतो, that is laterite soil. Option 2. The maximum biodiversity is found in आपन देखिया पई पाइबे tropical rain forest. The smallest ocean होची, that is Arctic Ocean. Option 4 is your right answer. When the moon completely covers the sun, it is known as the umbra. We can say. Next, the planet revolving east to west, because I am जानती west to east way, but it east to west होची. Okay, east to west होची माने Venus. Venus is your right answer. Next, trees are leafless for a shorter or longer season for the year in, that is deciduous forest. That is the last question. The area reserved for the welfare of wildlife is called, national park. National park is your right. The following best describes an open economy. Try करिबा. निम्नक्त मध्यरु केउटा एक open economy हि परिबो. Open economy निम्नक्त मध्यरु केउटा होई परिबो. Open economy माने कोन? जेउठारे गोटे आमे कहि परिबा foreign trade allow रहइबो. Okay, it means कोनोसी barrier रहइबो नाही. Option C choose करंतु. Barrier free international trade is allowed, that is called open economy. Okay, open economy हि परिबो. Closed economy रे कोन हबो ना आपण foreign trade को करि परिबे नाही, that is closed economy. Next, question number 2 try करिया. Which of the following is a characteristic of a closed economy? गोटे closed economy रो characteristic कोन हि परिबो? Question number 2.
ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଲାଉଡ୍ ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ଡି नो ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ୍ କୁହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଓପେନ୍ ମିକ୍ସଡ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ବୋଥ ଆମେ वी कैन से सोशलिस्ट एंड कैपिटालिस्ट समाजवाद एवं पुंजीवाद उभयକୁ ନେଇକି मिक्सड इकोनॉमी भारत में प्रचलित अटे। ठीक अछि इंडिया रो इकोनॉमी होची मिक्सड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया कहि परिबा। ठीक अछि नॉर्थ कोरिया रो इकोनॉमी टा होची क्लोज्ड इकोनॉमी कोनोसी भी फॉरेन ट्रेड सेठारे भलो भाबरे होय नाही। ए डेवलप्ड कंट्री टाइपिकली हैज आपण गोटे डेवलप्ड कंट्री बोली केते बेले कहि परिबे गोटे कंट्री डेवलप हबो जते बेले यार हाई एवरेज इनकम रहइबो। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। जे कंट्री रो एवरेज इनकम ता अधिक सेही कंट्री को हमें डेवलप कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री रो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक फीचर नुह हाई एवरेज इनकम ता। ऑप्शन बी हाई एवरेज इनकम गोटे डेवलपिंग कंट्री रो फ्यूचर हेबो नाही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय गोटे देश अंडर डेवलप्ड अटे। इट मींस कोन सेठारे हाई पॉवर्टी रहिछि हाई पॉवर्टी। ठीक अछि हाई पॉवर्टी हेबो यार राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इंडिया's डेवलपमेंट स्टेटस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंडिया टा गोटे कोन हम देश गोटे कोन हम देश होछि डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड ना डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री। ऑप्शन सी डेवलपिंग कंट्री हेबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द मेन मोटिवेशन फॉर बिजनेस इज। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माने पूंजीवादर जो अर्थ व्यवस्था रही द मेन मोटिवेशन फॉर बिजनेस इज प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करबा। ऑप्शन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मन रखंतु प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाको समाजवादर अर्थनीति कहा जाय। ठीक अछि समाजवाद ऊपर आधारित अर्थनीति रे कोन थिबो ओनरशिप ता का पाके थिबो गवर्नमेंट हाथ रे थिबो सरकार को हाथ रे थिबो। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ बिजनेस रे कोन हबो दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी जेमिति रूसिया। नेक्स्ट इन ए प्लान्ड इकोनॉमी प्राइसेस आर गोटे प्लान्ड इकोनॉमी रे प्राइस ता कोन हबो गोटे प्लान्ड इकोनॉमी रे प्राइसेस आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म इज कोन पूंजीवादर मुख्य डिसएडवांटेज ता कोन हे परिबो पूंजीवादर हाई इनकम इक्वालिटी वी कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इकोनॉमी हैज हाई गवर्नमेंट इंटरफेस एंड नो प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट। इट मींस कोनोस भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रो राइट रहबो नाही दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन सी सोशलिस्ट इकोनॉमी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी रे कोन हे परिबो फ्री ट्रेड हे परिबो दैट इज गोटे हमें कहि परिबा गोटे भलो इनिशिएटिव टा गोटे ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट कोंतु कैपिटलिज्म प्रमोट्स पूंजीवाद कोन प्रमोट करे पूंजीवाद प्रमोट करे प्राइवेट ओनरशिप। ऑप्शन सी प्राइवेट ओनरशिप वी कैन से। प्राइस मेकानिज्म इज ए फीचर ऑफ प्राइस मेकानिज्म टा गोटे कहारो फीचर हे परिबो प्राइस मेकानिज्म टा गोटे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रो फीचर हे परिबो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था रो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोस ए मिक्स्ड इकोनॉमी। देखंतु यूएसए फॉलो करूची यूके फॉलो करूची इंडिया आल्सो फॉलो करूची सो ऑल ऑफ द अबव वी कैन से। ओके ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हु डिसाइड्स व्हाट टू प्रोड्यूस ये करिवो मार्केट फोर्स डिसाइड करिवो व्हाट टू प्रोड्यूस गोटे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था मध्य रे। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन कोन इकोनॉमिक प्लानिंग ता प्रथमे यूएसएसआर कोन इंट्रोड्यूस करथिला यूएसएसआर हो मन रखंतु परीक्षा राशि पारे। व्हिच ईयर डिड द यूएसएसआर बिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों मसिया रेटा इंट्रोड्यूस होइतला 1928 मसिया 1928 रे याको इंट्रोड्यूस करा जाइतला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कोंतु फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग रो फादर जनक की अटंती इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग रो जनक हेउचंदी
एम विश्व, ऑप्शन डी एम विश्व सराय, एम विश्व सराय मन रखंतु एम विश्व सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी एही पुस्तकटी को किए लिखिथिले, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एही पुस्तकटी को किए लिखिथिले, एम विश्व सराय, ऑप्शन सी एम विश्व सराय इज योर राइट आंसर। हु चेयर्ड द नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 रे, नेशनल प्लानिंग कमिटी जहा 1938 रे गठित होइतिला, यार अध्यक्ष किए थिले, हु चेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1938 नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज सेट अप ड्यूरिंग, 1938 रे नेशनल प्लानिंग कमिटी को प्रतिष्ठा करा जायतिला ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, से समय रे ब्रिटिश शासन चलिथिला। सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड, आईएनसी रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सुभाष चंद्र बोस कोन थिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थिले जेतेबेले नेशनल प्लानिंग कमिटी को गठन करा गला। द गांधीयन प्लान 1944 वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक अछि, गांधीयन प्लान को प्रपोज करा जायतिला कहा द्वारा, गांधीयन प्लान को प्रपोज करा जायतिला एन अग्रवाल द्वारा, ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द पीपुल्स प्लान इन 1945, पीपुल्स प्लान 1945 रे किए प्रपोज करथिले, एम एन रॉय, एम एन रॉय मन रखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वोदय प्लान, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, द सर्वोदय प्लान वाज प्रपोज्ड इन द ईयर, सर्वोदय प्लान को प्रस्तावित करा दिथला केउ मसिया रे, 1950 रे, ऑप्शन सी 1950 मसिया रे मन रखंतु। नेक्स्ट, द सर्वोदय प्लान वाज एसोसिएटेड विथ, सर्वोदय प्लान कहा सहित जड़ित थिला, सर्वोदय प्लान वाज एसोसिएटेड विथ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हबो यार राइट आंसर। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन इंडिया कम्स अंडर व्हिच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ता आसीबो आपनकर कनकरेंट लिस्ट अंडर रे, ठीक अछि, कनकरेंट लिस्ट। देन कोंदु, द टर्म कनकरेंट लिस्ट इज फाउंड व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th शेड्यूल, ठीक अछि, कनकरेंट लिस्ट कोन उभय राज्य एवं केंद्र द्वारा निष्पत्ति निया जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, कोन इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग रो आर्किटेक्ट भाबरे किए जना जाନ୍ତି, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग रो आर्किटेक्ट भाबरे पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस जना जाନ୍ତି आर्किटेक्ट भाबरे। नेक्स्ट, पीसी महालोनोबिस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू 5 ईयर प्लान्स रे तांकर कंट्रीब्यूशन थिला, बेसिकली हमें कहि परिबा सेकंड 5 ईयर प्लान्स रे तांकर बहुत कंट्रीब्यूशन थिला। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इंडिया अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, कहारो मॉडल अनुसार, सोवियत रूस रो यूएसएसआर रो मॉडल को इंडिया रे अडॉप्ट करा जायतिला, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया प्राइमरली एम्स एट, इकोनॉमिक प्लानिंग रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला, मुख्य उद्देश्य थिला सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पे, केमिति हमें सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट करि परिबा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। When was the Planning Commission of India established? प्लानिंग कमिशन को केबे भारत रे प्रतिष्ठा करा दिथला, प्लानिंग कमिशन को 15 मार्च 1950 मसिया रे प्रतिष्ठा करा दिथला। Who was the first chairman of the planning commission? प्लानिंग कमिशन रो प्रथम चेयरमैन किए थिले, जवाहरलाल नेहरू थिले, ऑप्शन सी हबो राइट आंसर। Who served as the last chairman of the planning commission? प्लानिंग कमिशन रो लास्ट चेयरमैन होचंती नरेंद्र मोदी थिले, नरेंद्र मोदी। देन एटा नीति आयोग रे रिप्लेस होई जायछि। The first deputy chairman of the planning commission was, प्रथम deputy chairman होचंती ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंद, गुलजारी लाल नंद मन रखंतु, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द प्लानिंग कमिशन वाज ए, प्लानिंग कमिशन मन रखंतु गोटे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और जाक वाजे गोटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भाबरे थिला, मींस या संविधान रे मेंशन थिला नाही। द प्लानिंग कमिशन वाज अटैच्ड टू व्हिच मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, who was the last deputy chairman of the planning commission? planning commission रो last deputy chairman होचंती मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन सी हबो राइट आंसर, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। नेक्स्ट, when was the planning commission replaced by नीति आयोग?
प्लानिंग कमिशन को नीति आयोग रिप्लेस करिछि दैट इज 1 जनवरी 2015 रे नीति आयोग को गठन करा दिथिला द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जाको एनडीसी वाज फॉर्मड इन एनडीसी केउ मसिया रे गठन करा दिथिला एनडीसी को 1952 मसिया रे गठन करा दिथिला मन रखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दा करन एटा द एनडीसी इज चेयर्ड बाय एनडीसी रो अध्यक्ष मुख्य के अटंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो मुख्य होचंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओके हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एनडीसी निम्नलिखित मध्यरु के एनडीसी रो मेंबर हे परिबे नाही निम्नलिखित मध्यरु के एनडीसी रो मेंबर हे परिबे नाही यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हे परिबे चीफ मिनिस्टर्स हे परिबे एंड प्लानिंग कमिशन रो मेंबर हे परिबे किंतु ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोन मेंबर नहंती दैट इज एनडीसी रो द एनडीसी इज ऑफन रेफर्ड टू एज एनडीसी गोटे कोन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो काम कोन गोटे मिनी पार्लियामेंट भाबरे काम करे ऑप्शन बी मिनी पार्लियामेंट भाबरे काम करिवो जहा 5 ईयर प्लान को एग्जीक्यूट करिवो नीति आयोग स्टैंड्स फॉर कोंतु नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन हिजो नीति आयोग रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वाज नीति आयोग रो प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन के थिले नीति आयोग रो प्रथम डेप्यूटी चेयरमैन थिले अरविंद पानगारिया ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग एज ऑफ 2024 द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग रो करंट सीईओ 2024 मसिया पर्यंत जदि हम कथा बा ताहले बीवीआर सुब्रमण्यम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज नीति आयोग रो मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव कोन हे परिबो प्रिपेयर लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट्स ठीक अछि नीति आयोग रो विजन टा होची 15 ईयर एंड यार एजेंडा होची एवरी 3 ईयर ठीक अछि प्रति 3 वर्ष रे यार एजेंडा को फाइनलाइज करा दे नेक्स्ट व्हिच मॉडल वाज यूज्ड इन इंडियास फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे भारत रो जो प्रथम पंचवार्षिक योजना थिला एथरे जे मॉडल टी यूज करा दितला दैट इज कोन ता थिला आपनकर ऑप्शन बी ओके हरोद दोमार मॉडल और हरोद दोमार मॉडल को है ऑप्शन बी होगा राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रथम पंचवार्षिक योजनाटा एग्रीकल्चर ऊपर गुरुत्व दिया दितला एग्रीकल्चर होगा राइट आंसर द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज तो प्रथम 5 ईयर प्लान रो एक्चुअल ग्रोथ रेट केते थिला 3.6% ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर द मॉडल यूज्ड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज द्वितीय पंचवार्षिक योजना रे जो मॉडल को व्यवहार करा दितला ताहा थिला मोहालनोबिस मॉडल मन रखंतु वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड प्लान एम्फसाइज्ड सेकंड जो 5 ईयर प्लान थिला ताहा हेवी इंडस्ट्री को अधिक एम्फसाइज्ड करथला ऑप्शन डी होबो यार राइट which steel plant was founded by USSR द्वारा I think भिलाई स्टील प्लांट को कोन करा दितला फाउंड करा दितला भिलाईटा होचे आपनकर भिलाईटा कोठी रहबो छत्तीसगढ़ राउरकेला तो ओडिशा देन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल ठीक है भिलाई होगा राइट आंसर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान कोन होबो थर्ड 5 ईयर प्लान रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन थिला सेल्फ रिलायंस मन रखंतु सेल्फ रिलायंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 the third plan is also known as third plan को कौन कहते हैं third plan is also known as गडगिल प्लान कहते हैं गडगिल এই প্ল্যানটি को प्रस्तावित करथिले गडगिल प्लान नेक्स्ट व्हाट मेजर रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्लान हॉलिडे माने कोन आपनकर जो कोन गोटे गेप आसी जाइतिला ठीक अछि पंचवार्षिक योजना को लागू करा जाउ नथला ड्यू टू भारत चाइना वार कहि परिबा ठीक अछि किबा जो गोटे क्राइसिस आसी जाइतिला तो सही समय रे नाबार्ड को इंट्रोड्यूस करा दितला ठीक अछि सही समय रे कोन सॉरी नाबार्ड नो इंट्रोड्यूस कथा को जाउनी एठी को जाउची व्हाट मेजर रिफॉर्म आना दितला सही समय रे बैंक को नेशनलाइज करा दितला ऑप्शन सी बैंक को नेशनलाइज करा दितला देन जदी प्रश्न आसीबो आपनकर दैट इज सही समय रे जतले बैंक को नेशनलाइज करा दैछि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 सेते बेले केतोटी बैंक को नेशनलाइज्ड करा दितला सेते बेले 20टी बैंक हो 20टी मत 14टी बैंक को नेशनलाइज करा दितला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट द फोर्थ प्लान वाज एम्ड एट चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य कोन थिला चतुर्थ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य थिला सेल्फ
reliance and price stability. Option C have right answer. The popular slogan during the fifth plan was Garibi Hatao, which Garibi Hatao thila panchama panchvarshiko yojanar gote nara. Option B is your right answer. Which institution was established in 1982 for rural development ପାଇଁ नाबार्ड को 1982 मसीह रे प्रतिष्ठा करा दितला. नाबार्ड है राइट आंसर. ओके. द सेवेंथ प्लान एम्ड टू रिड्यूस सेवेंथ जो 5 ईयर प्लान या गला यार मुख्य उद्देश्य थिला टू रिड्यूस दैट इज व्हाट टू रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करियो थिला यार मुख्य उद्देश्य. सेबी ठीक अछि. सेबी रो फुल फॉर्म कोन हबो? सेबी रो फुल फॉर्म कोन हबो कमेंट सेक्शन रे जानतु. ठीक अछि. स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेबी को एस्टैब्लिश करा दैतिला केउ पंचवार्षिक योजना अंडर रे सेबी को एस्टैब्लिश करा दैतिला. सेवेंथ 5 ईयर प्लान मन रखंतु. सेवेंथ प्लान हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट द एट्थ प्लान प्रमोटेड जो अष्टम पंचवार्षिक योजना थिला. ठीक अछि. ता प्रमोट करे काकू लिबराइजेशन हबो यार राइट आंसर. उदारीकरण. नेक्स्ट द मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करा दितला केउ मसिया रे. मिड डे मील को इंट्रोड्यूस करा दितला 1995 मसिया रे. मन रखंतु. नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च करा दितला 2001 मसिया रे. ऑप्शन सी हबो राइट आंसर. The focus of the ninth plan was ninth 5 year plan रो मुख्य उद्देश्य रहुची सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट नरेगा वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नरेगा को इंट्रोड्यूस करा दैतिला 10th दशमतम पंचवार्षिक योजना अधीन रे. नेक्स्ट द 11th प्लान एम्ड फॉर ठीक है जो 11तम पंचवार्षिक योजना थिला यार मुख्य उद्देश्य होची इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑप्शन सी मन रखंतु. Inclusive and sustainable development. The Right to Education Act was passed in Right to Education Act को पास करा दितला क्यों मसिया रे. Right to Education Act 2009 मसिया रे पास करा दितला. Next the theme of the 12th plan was 12th मोटो आपनकर 12 टी पंचवार्षिक योजना को लागू करा दैछि. ओके तो 12 नंबर जो पंचवार्षिक योजना थिला यार थीम कोन थिला यार वार्ता कोन थिला और वी कैन से अधिक फोकस करथिला का ऊपर अधिक फोकस थिला faster more inclusive and sustainable growth. That is the theme. Option B होगा यार right answer. Next, the Food Security Act was passed in कौन तो Food Security Act को क्यों मसीह रे पास करा दितला. Food Security Act को 2013 मसीह रे पास करा दितला. Next question. The चक्रवर्ती model was used in चक्रवर्ती model थिला आपनकर क्यों पंचवार्षिक योजना को चक्रवर्ती model भाबरे जणा जाय third 5 year plan. Third plan होगा right answer. The Green Revolution began during the सबुज विप्लव आरंभ होइतिला थर्ड 5 ईयर प्लान रे. थर्ड प्लान हबो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनाउंस्ड. प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्वाधीन भारत रो प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी थिला 6 अप्रैल 1948 रे. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अनाउंस्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948. याको के अनाउंस करथिले श्यामा प्रसाद मुखर्जी. मन रखंतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी हबो राइट आंसर. नेक्स्ट which category in the 1948 policy was under complete government control. 1948 मसिया रे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को घोषणा करा दितला निम्नलिखित मध्यरु केउ कैटेगरीटा कंप्लीटली सरकारंकर नियंत्रण थिला दैट इज स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री हबो यार राइट आंसर. ठीक अछि जेमिति आपनकर कोन आसी होछि एटॉमिक एनर्जी आसी जिवो रेलवे आसी गला एमिति स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हे जिवो. Next, who was the chief architect of industrial policy of 1956? Chief architect किए थिले PC Mahalanobis. Option B is your right answer. The industrial policy 1977 was introduced by which government? क्यों government? 1977 जनता पार्टी थिला. जनता पार्टी रो सरकार याको इंट्रोड्यूस करथिला. Next, the 1977 industrial policy emphasized अधिक गुरुत्व दुतला काको that is cottage and small industries. ठीक अछि. ऑप्शन सी हबो राइट आंसर. Which prime minister introduced the industrial policy of 1977? से समय रे प्रधानमंत्री के थिले से समय रे प्रधानमंत्री थिले मोरारजी देसाई. ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर. मन रखंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को इंट्रोड्यूस करा दैतिला
24 जुलाई 1991 मसीह 24 जुलाई 1991 नेक्स्ट द फिनांस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द 1991 पॉलिसी वाज के थिले डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले अर्थमंत्री नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the Prime Minister when the 1991 policy was announced? से समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव. Option B is your right answer. The 1991 reforms are also known as that is LPG reforms कुआ जाए. कौन है LPG reforms कहंतु? LPG reforms कौन है परिबो? The term LPG in 1991 reforms stands for LPG होची liberalization, privatization and globalization. Next. Under liberalization what was abolished? ଯେତେବେଳେ ଲିବରାଇजेशन ना गला याको उदारीकरण कहा जाए काहा को उच्छेद करा गला काहा को लाइसेंस राज को कोन करा गला दैट इज एबोलिश्ड अंडर प्राइवेटाइजेशन व्हाट वाज एनकरेज्ड प्राइवेटाइजेशन रे अधिक एनकरेज करा जाउची काहा को डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएस पब्लिक सेक्टर रे थिला डिसइन्वेस्टमेंट करा गला इट मींस सरकारंकर नियंत्रण को एठारे कोन करा गला कम करा गला अधिक प्राइवेटाइजेशन ऊपर गुरुत्व दिया गला नियंत्रण और वी कैन से शेयर ठीक अछि ग्लोबलाइजेशन इन द 1991 रिफॉर्म्स एम्ड एट जेतेबेले ग्लोबलाइजेशन करा गला ठीक अछि यार उद्देश्य कोन थिला ग्लोबलाइजेशन रो उद्देश्य थिला इंटीग्रेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमी ऑप्शन सी हवा राइट आंसर ए की रीजन फॉर द 1991 रिफॉर्म्स वाज जेतेबेले 1991 मसिया रे ठीक अछि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा दितला यार मुख्य कारण कोन ही परियो यार मुख्य कारण थिला मन रखंतु बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक अछि सेतेबेले गोटे क्राइसिस देखा जाइतला Next, the economic crisis of 1991 was due to okay जेतेबेले 1991 रे इकोनॉमिक क्राइसिस देखा दितला यार कारण कोन थिला दैट इज हाई फिस्कल डिफिसिट जगो दैट इज क्राइसिस देखा दितला who is known as the father of economic reforms in India father of economic reforms in India के कोन तो इंडिया रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रो फादर भाबे के जाना जानती पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी एम्स टू डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी रो मुख्य उद्देश्य कोन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी रो मुख्य उद्देश्य होजे रिड्यूस गवर्नमेंट रो जो स्टेक रही इन पीएसयूज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हबो कोन इकोनॉमिक एक्टिविटी निम्नलिखित मध्यरु केउटा ही परिबो देखंतु praying in a temple এটা ଗୋଟେ religious activity that is economic এটা non economic activity farming for personal consumption এটা মধ্যে হবন volunteering in a hospital এটা মধ্যে হবন এটা মধ্যে ଗୋଟେ non economic activity option C teaching in a school for salary ঠিক আছে কোনসি সেবা বদଳରେ ଆପଣ କିଛି earn କରୁଛନ୍ତି that is ଗୋଟେ economic activity ଅଟେ who introduced the canons of taxation को किए introduce करथिले आदाम स्मिथ स्कॉटलैंड रो जने इकोनॉमिस्ट थिले ठीक अछि से याको इंट्रोड्यूस करथिले नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ माइक्रो माने कोन जोटा स्मॉल ठीक अछि सो वी कैन से हाउस होल्ड एंड फर्म लेवल डिसीजंस ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु आज लास्ट क्वेश्चन कौटिल्यस फेमस बुक कोन थिला अर्थशास्त्र थिला ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर